once again to my Dr. Shilpa Totla's life. And as you all see, today's topic is so very interesting. And it's not only interesting, it is going to empower the entrepreneurs in developing their team, right? अपनी टीम का अगर हमें परफॉर्मेंस एनहांस करना है, in making the team, right? The topic given is how to make the art of making the team perform, right? So अगर वो करना है, तो this is the best for you. And let me tell you guys, this is the first of its kind. इसकी एक सीरीज हम अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट, क्योंकि इट इज नॉट अ टॉपिक जो 15-20 मिनट में मैं कवर कर लूंगी, राइट? एम्प्लॉई परफॉर्मेंस को लेके इट इज नॉट दैट शॉर्ट, राइट? एंड आई नो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके लिए एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस इज द बिगेस्ट बिगेस्ट important thing and the biggest challenge. वो जितना important है, उतना challenging भी है, उतना complex भी है, इतना आसान नहीं है। ओके, तो आज हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं, और जैसे किसी भी चीज की शुरुआत हम जब करते हैं तो हम उसके ए बी सी को जानते हैं। उसी प्रकार से आज भी हम ए बी सी ऑफ हाउ टू एनहांस एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस का जानेंगे। एंड व्हेन आई से एबीसी, आई एक्चुअली मीन इट। आज एम्प्लॉयज को लेके हम एबीसी कहेंगे। फ्रेंड्स, व्हाई दिस टॉपिक वाज इम्पोर्टेंट? देखिए, बिकॉज इवन यू ऑल नो दैट जहाँ भी हम जाए, चाहे वो एक हॉस्पिटल हो, चाहे वो एक छोटा सा क्लिनिक हो, चाहे वो एक डायग्नोस्टिक हो, पैथोलॉजी वाला डायग्नोस्टिक, एक्सरे, रेडियोलॉजी वाला डायग्नोस्टिक या मिक्स डायग्नोस्टिक, आप हेल्थ केयर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, और अगर आप 5 मिनट भी किसी ओनर से, एंटरप्रेन्योर से बात करोगे, तो आपको पता चलेगा दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज सबका पेन पॉइंट है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। हमारे ना एम्प्लॉयज कैजुअल है, हमारे एम्प्लॉयज फोन पे टाइम पास करते हैं, हमारे आई हैव एम्प्लॉयज आर नॉट लॉयल, आई कांट ट्रस्ट माई एम्प्लॉयज, XYZ, ABC has happened with me. My employees have done this with me. है ना? So people are very very bugged up, you know, and with this issue of employee performance. ये है क्लाइंट साइड, ये है ओनर साइड। दूसरी साइड में हम अगर देखें, तो द एम्प्लॉइज, राइट, दे विल से आवर ओनर डजंट ट्रस्ट अस। यार, हम जान जान हथेली पे डाल देते हैं उनके, फिर भी दे डोंट ट्रस्ट कि वी आर वर्किंग। हम इतनी लॉयल्टी से काम करते हैं, दिन रात अपना जान डाल के काम करते हैं, वी पुट आवर ब्लड एंड स्वेट एंड एवरीथिंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट ही डजंट ट्रस्ट अस, यू नो। उनके चैलेंजेस अलग है। नाउ नाउ ये जो है ना, ये पैरेलल चलती है, दोनों भी साइड से कंप्लेंट्स पैरेलल चलती है। हम तो बिकॉज वी आर इनटू रिक्रूटमेंट, मेडे रिक्रूटर्स में तो हम दोनों साइड से इतना सुनते हैं कि आई रियली फील सो हेल्पलेस कि हाउ कैन आई टेल कि डू समथिंग, डू दिस, डू दैट एंड कम टू अ विन 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 सिचुएशन, राइट? विन 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 कहने से तो चलो आज विन विन कहेंगे, तो विन विन सिचुएशन it becomes, it has become so because it's been around 12 years, I'm into media recruiters और pan India, हम हर हर हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल ओनर से हम बात करते हैं, कितने डॉक्टर से हम बात करते हैं, तो वी नो दैट दिस इज अ वेरी वेरी यूनिवर्सल प्रॉब्लम। और मैं ये एक दावे के साथ कह सकती हूँ, सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री नहीं, पर हर इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है। ओके, सो दिस मेक्स मी अंडर, एंड ऊपर से आपको मैं बताऊं कि there are, every industry, every business has got some ups and downs, right? In their business कुछ up and down है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम ठंड का जो हेवी रेन्स का मौसम है, तब हम देखते हैं कि ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत स्लैक है। या जब मार्च अप्रैल का महीना है, जब एग्जाम्स सर तरफ है, तो उस वक्त बहुत स्लैक होता है ट्रैवल इंडस्ट्री में, राइट? उसी प्रकार से हेल्थ केयर में स्पेशली winters are slack season because it's a very healthy month, right? Viruses and all don't survive much or don't disseminate much in winters. Plus, people are eating really healthy food,
इसलिए भी winters are considered as healthy season for people, but it is a slack season for healthcare. So ऐसे में अगर ये slack season है, एम्प्लॉई स्ट्रेंथ उतनी ही है, और ऊपर से अगर इफ यू सी कि ये एम्प्लॉइज हमें परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, देन एंड यू डोंट इवन मीट योर एक्सपेंसेस, आपका ब्रेक इवन भी नहीं मीट हो रहा है, then the entrepreneur really gets very, very irritated and very, very frustrated. So this made me think, chalo, let me start this series and help the entrepreneurs, understand the employees well, right? So friends, जैसे कि गोल्ड लेने जाते हैं हम, गोल्ड ज्वेलरी, तो उसमें व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ gold? Can you just help write in the chat box? What is the purest form of gold? Purest form of gold को क्या कहते हैं? Just write in the chat box or in the comment box. You are on YouTube, some are on LinkedIn, some are on Instagram, some are on Facebook, wherever you are. Please write which is the purest form of, of gold. Yes, people are writing. People are writing. So meanwhile, let me welcome Savan Churiwal sir. Most welcome. Kalpana Munde, ma'am. Deepak Loya ji. Deepak bhaiya, most welcome. Aditya Wagh, G Rathod, Sneha. All of you, most welcome. Tanveer. So, most welcome and good evening to all of you. Yes, you're right. 24 carat. Yes, 24 carat. Aditya is replying, and I'm seeing replies on many platforms. 24 carat is the highest form, purest form of gold, right? उसी प्रकार से in your employees. And friends, let me tell you, I really don't like to use the word employees. और उससे भी ज़्यादा staff, ये word तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझती उसको use करना. Even if you are if you're an entrepreneur, please staff को staff मत बोलिए, उन्हें employees कहिए. And the sweetest word to be used is team member, right? Team member. But यहाँ पे वो थोड़ा लंबा word है और थोड़ा सा, for the ease of using, I'm using employee, which is still a better word than staff. So team, because it is a team. And we as entrepreneurs, even I have my own personal 2 organizations plus my husband's 1 organization. So it's a team. And I always say कि ये जो गेम हम खेल रहे हैं, ये जो गेम खेल रहे हैं उसकी कैप्टन मैं हूँ, पर खेलना तो सबको है, राइट? सो वी आर जस्ट प्लेइंग अ गेम एंड वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट. जैसे गेम में हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं, we are just trying to give our best. So we all are in the team, right? So coming to like there is 24 carat in gold, which is the best, and then there is 22 carat, and then there is 20 carat. Similarly, in employees also there are some people like this. But how, on what basis do we understand कि 24 carat वाले कौन है? Okay, so the 24 carat people are the 24 carat people are called as A employees, right? A employees. Now, what are these A employees? A category employees. So we have A, B, C category of employees. अब ये दो parameters पे इसे हम लोग देखते हैं. We select this on the parameters, 2 parameters. One is competence and second is commitment, right? So commitment and competence. Now commitment मतलब आप समझ रहे हो कि जो बहुत लॉयल है आपके लिए, जिनको who really want that the organization excels और customers को best service जाए, patients को best service जाए, and this is my boss and my boss is like God to me, my mother, my father. इस प्रकार से जो सोच के काम करते हैं, trying to give their best, उसको कहेंगे committed ones, right? इसके भी कुछ और सब पार्ट्स हैं जो हम आगे देखेंगे, but today I'm just making it simplified. They are A category employees, right? Then we have B category. Sorry, so that is commitment. I'm just trying to take people live, whoever are employed, excited to come live with me. So that is a commitment. Then there is competent employees. मतलब कि skills wise best है. अगर आप लैब चला रहे हो तो लैब टेक्नीशियन, अगर आप ये चला रहे हो, let's say hospitals, so the nurses. So these people are your these are the competent ones. जिनके skills wise आप एकदम best काम वो करते हैं. They understand, their grasping is good, they are already good and they understand it well.
कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट के बेसिस पे अब हम ए बी सी देखेंगे। और ए कौन है? ए कैटेगरी टीम मेंबर्स या एम्प्लॉइज कौन है? हु आर कॉम्पिटेंट प्लस कमिटेड, यू नो, they are the best, they are your best people. Now B में there are two parts, be committed, be competent, right? Which means be committed जो है वो competent नहीं, they are trying their level best, you know, they have wonderful intentions for your organization, but कहीं ना कहीं skills में ना थोड़े weak पड़ जाते हैं, right? These are be committed. Be competent जो बहुत ही स्किल्ड है, बट समवेयर वेरी, यू नो, हम जिन्हें लेबल कर सकते कमर्शियल है, या यू नो अपने काम से काम मतलब लेने वाले, वे अपने अपनी ड्यूटी करो, ज़्यादा यू नो डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड और डोंट डू सो मच, सो दे आर वेरी फास्ट इन लर्निंग, बट यू विल सी कमिटमेंट वाइज थोड़े से वीक है, दे आर बी कॉम्पिटेंट, राइट? एंड देन यू आर सी जिनका कमिटमेंट एंड कॉम्पिटेंस दोनों कम है, बोथ इज लेस, दे आर सी। तो इट गोज विदाउट सेइंग, इसमें से कौन सी कैटेगरी आप फायर करोगे? Yes, please use the chat box and tell me which category are you going to fire. You don't want to continue with them, or then you know what? Very, very thankfully, God is so great that sometimes, you know, many times I have seen कि ऐसे लोग ना अपने आप ही निकल जाते हैं, they quit the job. You know, you don't by the time, sorry, by the time you're going to tell कि भाई साहब बहन जी प्लीज, you know, you can look somewhere else, or then you are being put on hold, etc. Before that, just आप सोच ही रहे हैं कि इनको बताया, उसके पहले ही वो जॉब क्विट कर देते हैं. This happens in 90% times, right? But if not, then please you have to very, very respectfully, you know, you have to terminate them because it is a liability. They are a liability to you. Now, who's the asset? अगर वो एसेट है तो वो अगर लाइबिलिटी है तो एसेट कौन है? प्लीज टेल मी व्हिच कैटेगरी इज एन एसेट फॉर यू? यस, कैटेगरी ए कि बी, और बी में बी कमिटेड, बी कि बी कॉम्पिटेंट? प्लीज यूज योर comment box and write which are the who are the assets for you. Yes, please, I'm giving you some time. A, who are competent and committed. I'll repeat for some people who have joined late. And B, who are, you know, be committed, be competent. Who are assets for you? Wonderful. 24 carat कौन है इसमें से? Okay, I'm just waiting for the right answer. I'm getting some answers, but I'm just waiting for the best answer. Yes, there it is. Yes, A category. Yes, you all are writing it rightly. A category is the best for you. 24 guarantee code. It goes without saying. Committed भी है, committed भी है, competent भी है, तो they are best. So friends, there is one Pareto's principle. There's an 80-20 Pareto's principle. This is very important. Please, you know, focus from here. You know, अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो 80-20 Pareto's principle पता होना बहुत जरूरी है. There are 20% of your employees, you know, are those who bring 80% of performance or revenue to your organization. Okay? Yes, Preeti Nalambarji, category A is right. So 20% people feel people are those in any organization who bring 80% revenue to the organization. Rest 80% of the people bring the remaining 20% revenue, right, to the organization. Now, do you understand how important it is? These 20% people are so important. And it again goes without saying, ये कौन से लोग हैं? Category A. Category A के जो लोग हैं, they are 20% people who are bringing 80% revenue to you. Do you understand how much important they are for you? तो आपको अगर ऐसे कोई दिख रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में even now who are committed and competent, please understand they are your A category, they are your 24 carat, they are your 80% revenue fetching people, right? And देखिए in service industry, I understand I'm speaking to healthcare people, so in service industry it is so difficult, like nurses है
जो बेस्ट है, रिसेप्शनिस्ट है, सुबह की थी, शाम की थी, सुबह की बेस्ट है, बट आपको रेवेन्यू के बारे में नहीं पता चलता। यू कैन नॉट सेपरेट इट, बट अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड ये आपको नहीं समझ रहा बिकॉज़ यू आर नॉट टेकिंग फीडबैक फ्रॉम एवरी पेशेंट। यू विल सम इफ यू रियली गो अहेड एंड टेक फीडबैक कि आप इसमें से आप जो आ रहे हो, तो कित आप जो यहाँ एडमिट होके गए हो, तो आप किसको कितने पॉइंट्स दोगे, हमारे ये जो लोग हैं, तो बाय द टाइम दे आर एडमिटेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दे नो एवरीथिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, दे नो ऑल द पीपल, एंड एंड दे आर द बेस्ट टू टेल यू। तो आपको दिखेगा ए कैटेगरी को वो बहुत अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं, राइट? नाउ दिस पर्सन विल कम टू यू अगेन, or he will send you other patients, the word of mouth, WOM जो होता है, if your A category people are more, and that is how the revenue increases. So in service industry, you really have to go ahead and take reviews and feedback from the customers, from the patients, but understand that they are really important for you. Now, what do you have to do with this A category people? First thing, appreciate and acknowledge them, right? ये भी होता है, हम कई बार अप्रिशिएट नहीं करते, हम सोचते हैं सिर पे चढ़ गया तो क्या करेंगे, या बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस आ गया तो फिर कहीं सैलरी बढ़ा के मांग लेगा, या कहीं इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, आई एम गोइंग समवेयर एल्स, मुझे यहाँ बुला रहे हैं, वहां बुला रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस डजंट हैपन, दे आर कमिटेड एंड दे आर कॉम्पिटेंट, कमिटेड है, दे विल नॉट डू लाइक दैट, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे नीड एप्रिसिएशन। जहां जहां मौका है जेन्यून अप्रिशिएट करो, एंड just keep them on the track, right? Now हम जा रहे हैं बी कमिटेड एंड बी कॉम्पिटेंट की तरफ। व्हाट टू डू विद दीज पीपल? बी कमिटेड के बारे में आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। ये बहुत स्वीट लोग होते हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स, दे आर वेरी दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, दे आर वेरी लॉयल, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर टॉक्स, फ्रॉम देयर एफर्ट्स, फ्रॉम देयर बॉडी लैंग्वेज, बट आप उन्हें नहीं बोलते, बट कॉम्पिटेंट नहीं है, तो यू आर वेरी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल नो टू देम। प्लीज ना आप मत आइए, यू कांट से बिकॉज दे आर कमिटेड। व्हाट इज योर जॉब? योर जॉब एज एन एंटरप्रेन्योर इज टू पुश स्किल्स इन देम, राइट? इन्हें ट्रेन कीजिए, मेंटोर कीजिए, कोचिंग कीजिए। सी दीज आर नॉट सिनोनिम्स। हम ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, कोचिंग के बारे में भी एक सेशन में लेने वाली हूँ, हाउ दे आर डिफरेंट, ओके, बट ऑल थ्री आर रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखिए, स्किल्स है, दे आर अक्वायरेबल, तो आप अक्वायर्ड स्किल्स है, इनको आप स्किल्स दे दीजिएगा, यू पुट देम इनटू दैट सिस्टम एंड इनके स्किल्स एनहांस कीजिए एंड पुश देम इनटू योर 20% the A category people, right? You can easily push them, but you have to be on it, you have to keep them doing this. Now B category people, they are competent, commitment इनमें अगर लाना है, you have to speak to them, you have to give them feedback, and see to it that whenever you speak in a way, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है, how you will be benefited. See that when you speak, it is about a win-win situation, that organization wins, you also win, right? अगर हमारी ये नाव आगे जा रही है, उसमें तुम भी हो, तुम भी आगे जाओगे, and you have to connect it in that way. So आप देख रहे हो कि A हो या B हो या C हो, right? You have to give them one common thing, and which is feedback. Feedback is very important to be given, कि जो A है उनका फीडबैक ही दोगे, आप अप्रिशिएट करोगे, वो फीडबैक ही है, एंड यू विल गिव देम फीडबैक। बी को भी फीडबैक देके ट्रेनिंग, कोचिंग में, बी कमिटेड को भी ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग में डालोगे, in what they need, competency में, so again it is through feedback. You have to give feedback to the B competent also. So one common bottom line is what is feedback. Feedback देना बहुत जरूरी है as entrepreneurs, it is very important. Now about feedback, again there is a misconception, there's a fear कि they will feel hurt उनको अगर हम सच्चाई बता देंगे, so please hold on, please don't give feedback today immediately. There is going to be a talk on feedback कैसे देते हैं, a very scientific way of giving feedback, जिसमें I'm going to give you two what we can say mock demonstrations, गलत feedback कैसे देते हैं, एक ऐसा मॉक करेंगे, I'm going to sit with an employee and give you that, and सही feedback कैसा दिया जाता है. So until then, just keep that in mind, okay? And
hold on to your curiosity for the next lives to come. So feedback is important, training, coaching, mentoring is important. Now, what will we do with this A? Coming back to A, that is very important. Friends, I always say, as entrepreneurs, we should be working not in the business, we should be working on the business, right? Our job is R&D. Our job is doing complex works which only we can do and others cannot do, right? So, अगर ये करना है, तो what is important? What is important is delegation. Very, very important. A smart delegation is important, and that happens. Delegation can happen only to A category people. Your A category people are the best to be delegated some of your tasks which are repetitive, which can be done by them, which will enhance their skills. You know, so again, it is a topic in itself, which again we will see. बट ऐसे कुछ चीजें जो वो कर सकते हैं, आप उन्हें दीजिए, वो भी ट्रेनिंग मेंटोरिंग करके दीजिए एंड डेलीगेट सो दैट दे climb one step ahead in the ladder and you can stack climb one step ahead. आप अपना कुछ उन्हें दे देंगे तो वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे. Then they will become your second line people. You will start immediately reporting to them. They become your managers. They become your managers, or they become your heads of the department. तो उसके लिए उन्हें delegate करना बहुत जरूरी है. Okay, so you push them into delegation, and you also take their help in training, coaching, mentoring the B category people. So friends, this is, if you do this, अगर आप ये 20-80-80-20 प्रिंसिपल, परेटोस प्रिंसिपल या कैटेगरी ए बी सी जैसे को ऑब्जर्व करके, उनको सेग्रीगेट करके, उनको सही फीडबैक दोगे और सही फीडबैक डेलीगेशन सही फीडबैक डेलीगेशन, कोचिंग, मेंटोरिंग और ट्रेनिंग जब होगा, तो definitely you will not have any challenges about performance. Let me be little practical. No challenges about performance तो होने से रहा, but absolutely we will be able to reduce the challenges to a big extent. Okay, so with this, I conclude today's session. Hope today, by today, in this week, you will be able to identify your ABCs and do certain, your thinking goes to next level, and what can I delegate, how to give feedback. Please do that. Please be into the inquiry until I come with my next topics on feedbacks and delegation. And so आज के लिए bye bye. Have a great week ahead. See you.